Bismillah Rahman Rahim. I am Sarah Khan, your instructor for the course titled Application of Statistics in Psychology with course code 509. This is our lecture number 33. From this lecture and onward, a series of lectures is going to be start, in which we will learn about the use of software SPSS, entering the data in the SPSS and testing the all type of the hypothesis with all type of the test statistics through using the SPSS. This is our first lecture of this series, in which we will discuss what is SPSS, then how to enter the data. Actually, when we have collected the data, with our research or about the research, the first thing which we need is to enter the data in the SPSS or in every any spreadsheet. So data entry is a very important task and the step of before the data analysis. Data can be entered in the SPSS very easily and can be handled very easily. Today we will learn that. Then after entering the data in the SPSS, we will compute our variables. If we are entering the data about the questions of any scale, then we can take the total of that scale by adding the scores on all questions about that scale. So in this way we will compute our variables. After computing the variables, then we describe the data. For description of the data, which is also known as the descriptive statistics, for describing the data, we use frequency distribution, mean, computing the central tendency, in which we use the mean, mode, median, arithmetic mean, according to the nature of the data, and also calculate the standard deviation, the mean deviation, skewness, and the curtices. All these statistical terms can define and describe our data very efficiently. Then we learn about how this data can be reported in our research papers. In all these lectures, we will learn how to report each test, t-test, one sample t-test, two independent sample t-test, and the related sample t-test in the same way. In independent samples, ANOVA, and the repeated measure ANOVA, chi-square. Every type of the test statistics which are using to test the hypothesis according to the nature of the data and the situations. We learn in these series of the lecture how to report the data in our research paper. SPSS is a window-based program that can be used to perform data entry and analysis
and to create tables and the graphs. We can also describe our data with the help of the tables and the graphs also. And SPSS is capable of handling large amount of data and can perform all type of analysis. First thing we need to do is, of course, after collecting the data, is enter our data into SPSS and tell the program what these data represent. The easiest way to do this is to use the data editor of SPSS. This is data editor. Use the data editor and enter the data into rows and the columns of the data editor, and also give the name in the variable view, and these names in the variable view given in the variable view will be appeared in the output of the SPSS. Once the data have been entered, the next step is to instruct SPSS to conduct the specific kind of the analysis which we want. There are two views of this data editor, data view and the variable view. Before analysis of the data, we have to enter the data into the SPSS. This is the data collected. This data of 25 participants of all the individuals and their score on the self-esteem scale. Every participant has a total score on which he or she have scored on the self-esteem scale is given in this list. We will enter this data in the SPSS data editor. Okay, we will minimize it so that we can also open up the SPSS sheet. Okay, this is our SPSS sheet. Also minimize it. First, we enter the data. Before entering the data, we will prepare our variable view so that we can enter the data in the columns of variables which we are going to make in this sheet. Okay, there are 1 to 25 participants, and we are no need of write this serial number because these rows are representing the serial number. You can see, so there is no need to write the serial number in the variable. We can write, हम लिख भी सकते हैं, हम सीरियल नंबर लिख भी देते हैं। सीरियल नंबर लिख दिया हमने,
obviously its serial number is the numeric type, and no need of decimal for this. There is no value, and only the nominal scale. Okay. The second is our study variable, which is self-esteem. So this is also numeric value, and there is no need of decimals. We can label our study variable here in the label. The name which we will given here will also appear in the output of the analysis. हमने वहाँ सेल्फ एस्टीम जो है यहाँ बगैर स्पेस के लिखा है, तो जो हमने बगैर स्पेस के लिखा है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए समझना समटाइम जो है, या इस तरह से हमारे एनालिसिस में आए तो वो मतलब अच्छी बात नहीं लगती। हम यहाँ पर सेल्फ एस्टीम को सेल्फ के एस को कैपिटल में लिखकर और एस्टीम के उससे खूबसूरत अंदाज उसका बनाएंगे। वैल्यू हमने कोई नहीं लेनी यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये जो सेल्फ एस्टीम है ये कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है। हम कैटेगरीज अगर किसी चीज़ की यहाँ पर देनी होती है तो उसको वैल्यू तमाम कैटेगरीज को उसके एक वेटेज के साथ, नंबर के साथ उसको वैल्यू दे देते हैं। तो ये हमारा स्केल है। इस तरह से हमने इस डाटा एडिटर में वेरिएबल व्यू में जाके हमने अपने डाटा एडिटर को इस काबिल किया है कि वो उसमें हम डाटा एंटर कर सकें। अब आपके सामने है ये सीरियल नंबर का पार, हमने दो ही वेरिएबल वहाँ पर एंटर किए हैं, सीरियल नंबर एंड द सेल्फ एस्टीम, एंड in the data view these two columns are representing these two variables which we have entered in the variable view. So we are going to start now. First of all I will enter the serial number. चूँकि डेटा एंटर करती रहती है इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। आप लोगों ने अभी स्टार्ट करना है ये सारा काम, तो आप लोगों को थोड़ी सी देर लगेगी। मैं बातों करने के साथ साथ ये काम कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि किसी किस्म की भी एक गलती जो है वो हमारे सारे एनालिसिस को गलत भी कर सकती है। कोई बीच में स्किप कर देते हैं, जो कुछ लिखना होता है कुछ और लिख देते हैं, तो इसलिए बड़ा ध्यान से इसको काम करना है। हमारे पास पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 25 हैं। अब देख लें मैंने क्यों कहा था कि हमने ज़रूरी नहीं है कि हम सीरियल नंबर लिखें। ये देखें, ये भी 25 है और ये भी 25 है, तो ये एक तरह से हमारा सीरियल नंबर ही है। तो अगर आपका दिल चाहे तो सीरियल नंबर मतलब एंटर कर दें वेरिएबल, और अगर ना दिल चाहे तो बेशक ना करें। वैल्यूज़ को हम जो है वो अलाइन कर लेते हैं, सेंटर्ड कर लेते हैं, ताकि हमारी जो सारी एंट्री है वो सेंटर्ड है।
جی اب ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں 26 فرسٹ پارٹیسپینٹ کا، دوسرے کا ہے 36، نیکسٹ 36، 31، 35، دین سکس کا 35، 33، 37، 37، 37، 37، 33، 25، 33 and 25، 34، 37، 35، 34، 37، 35 and 34، 26، 34، 26، 37، 30، 37، 30، 37، 29، 37، 29، 36، 34، 36، 34، 29، 30 and 33. We have entered the data very successfully. Okay. We now اگر یہ سیلف اسٹیم کے ٹوٹل اسکور کے بجائے اگر ہم نے اس سیلف اسٹیم اسکیل کے جتنے بھی کوشچن ہیں 10 کے 15 کے یا 20 ہیں ان سارے کوشچنس کو یا سارے آئٹمس کو ہم نے یہاں پر انٹر کیا ہوتا تو پھر ہم یہ جو ٹوٹل اسکور آیا ہے اسے بھی ہم اس کے SPSS کے اندر ہی کمپیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹرانسفارم میں کمپیوٹ ویریبل پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ آج اباؤٹ دا کمپٹیشن آف دا ویریبل، لیکن یہاں پہ چونکہ ضرورت نہیں ہے کوئی، تو اس لیے اسے آج ہم نہیں سیکھیں گے، اسے ہم کسی اور دن سیکھ لیں گے. ابھی ہماری یہ سیریز آف لیکچر اسٹارٹ ہو گئے ہیں، تو کسی نہ کسی لیکچر میں ہم اسے رکھ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اگر کوئی ٹوٹل لینا ہے تو وہ ہم کس طرح کریں گے. اوکے، اب ہم اینالائز میں جائیں گے اور ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اینالائز. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر یلو ہوتا جا رہا ہے جہاں جہاں جو اسٹیپ ہم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ڈسکرپٹیوز کو ہم کر لیں گے. ہمارا یہ ایک ویریبل ہے جس کہ ہم اس ڈیٹا کو ڈیٹا کو ہمیں ڈسکرائب کرنا ہے. We pick one variable from this side, this left hand side, and transfer this variable into variable section. So there are three options. We open the options. Now we can see already some statistics is checked in. We want to know about the mean of this or the central tendency of this data. We also want to know the standard deviation. We also want to know the range of the scores by knowing about the minimum and the maximum value. We can also calculate the value of the range, standard error of mean, curtices, and the decisions. We need
to know all these. You can also check this sum. Then when ever we analyze the data, we go from one step to the other step, and finally in the final step there are further windows can be open. Whenever some new windows open, we select the items or anything which is going to be instructed to do in these newly opened windows. We do that work, and then we press the continue button. Okay. Now in one click we calculate all these things. We press the OK, and this is all the descriptive phrases of our study variable. सबसे पहले n कैपिटल है, सेल्फ एस्टीम कितने लोगों की मेजर की है हमने 25 की, रेंज इसकी क्या है 12 है। वो कैसे निकली होगी जब हम 37 में से 25 माइनस करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम में से मिनिमम जो हम माइनस कर देंगे। सम इसका यानी सबको जमा करके क्या आया है वो भी दिया हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम हो। एनी हाउ मीन वैल्यू है जी 33, और इस मीन वैल्यू का जो स्टैंडर्ड एरर है वो 0.75 है। इसी तरह से स्टैंडर्ड एविएशन इस मीन वैल्यू की वो है 3.753, और इसी तरह से सिक्योरनेस और कर्टसेस है, और ये हमारी रेंज के अंदर ही है क्योंकि कुछ थ्योरिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि माइनस और +2 के दरमियान दरमियान होनी चाहिए, और कुछ इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि -3 और +3 के दरमियान होनी चाहिए, सिक्योरनेस को भी और कर्टसेस को भी। एनी हाउ these are all the descriptives of our data set. There are some other ways to calculate these values. We will select the analyze and go to the descriptive statistics and click on frequency. So display of frequency table is by default checked. अगर हमें frequency tables जो हैं वो हमें उसका डिस्प्ले नहीं चाहिए तो हम इसे अनचेक कर देंगे। अभी कह रहा है कि पहले वेरिएबल डालें, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल्स में पुट कर देंगे हम, और उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ मीन भी है, मीडियन भी है, मॉड भी है, और क्वार्टाइल्स भी हैं, परसेंटाइल्स भी हैं, ये भी है, बाकी भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम, मतलब ये कि हम और ये सिक्वेंस और कर्टसेस। तो हम किसी भी तरीके से एनालाइज में से फ्रीक्वेंसीज में जाके या एनालाइज से डिस्क्रिप्टिव में जाके हम ये सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हैं उन्हें हम SPSS के थ्रू वन क्लिक पर हम उन्हें कंप्यूट कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि जब कभी कोई नई विंडो ओपन हो जाती है, ये अगर हम देखें तो ये हमारी विंडो थी जो कि फ्रीक्वेंसीज को क्लिक करने पर हमारे पास आई है। मैं दोबारा से आपको जाके दिखाती हूँ। ये एनालाइज है और ये हम डिस्क्रिप्टिव और ये हम फ्रीक्वेंसीज। जब मैंने स्टैटिस्टिक्स को प्रेस किया
تو یہ ایک نئی ونڈو اور اوپن ہو گئی. اس میں سے جو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد مجھے کنٹینیو بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک کنٹینیوشن فارم میں ہے. اور چونکہ سلیکٹ بھی کر رہی ہوں چیزیں ساتھ ساتھ، تو یہ تقریباً ساری یہ والی ہے. ہم نے کنٹینیو کیا اور سوری اوکے، اس میں سے ہمیں کوئی چیز ایسا چاہیے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم اسے کنٹینیو کر کے ہی جائیں گے. ہاں، اگر ہم نے چارٹس بنانے ہیں، بار چارٹ بنانا ہے، پائی چارٹ بنانا ہے یا ہسٹوگرام بنانا ہے، وہ بھی اسی انالیسس کے اینالائز سے ڈسکرپٹیو اور ڈسکرپٹیو سے فریکوینسیز نکالتے ہیں. جو لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس، چارٹس، فارمیٹ، اسٹائل اور جو اسٹریپ ساری آپشنز آتے ہیں، تو اس میں آپشن چارٹس کی ہے. جب ہم چارٹس کو کلک کریں گے تو ہم وہاں پر ہمارے پاس مختلف قسم کی چارٹس کی آپشن آ جاتی ہے، جیسے ہسٹوگرام ہے، بار ڈائیگرام ہے، اور بھی جو ہے پائے چارٹ جو ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں. میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتی ہوں. پائی چارٹ ہے، ہسٹوگرام ہے اور بار چارٹس ہے. لائن جو گراف ہے وہ اس کے اندر اس کی آپشن ہے. اینی ہاؤ ہم اسے کنٹینیو کریں گے. اگر ہم نے اس کا ہسٹوگرام بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ کنٹینیوسلی، تو اس کو ہم صرف اوکے کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اچھی ویسے آ جائیں گی. سب سے پہلے تو یہ مین، اسٹینڈرڈ ایویشن، میڈین، موڈ، اسٹینڈرڈ ایویشن، ویریئنس، سیکوینس اور ورٹیسز اور اسٹینڈرڈ رینج ہے، رینج بھی دی ہوئی ہے اور میکسیمم اور منیمم بھی دیا ہوا ہے. یہ سیلف اسٹیم کا فریکوینسی ٹیبل ہے. صرف یہ 25 اسکور جو ہے وہ کتنے لوگوں نے، یہ کتنے پارٹیسپینٹس نے لیا ہے، 26 کتنے پارٹیسپینٹس نے لیا ہے، 29 کتنے پارٹیسپینٹس نے لیا. یہ ہمارے پاس سیلف اسٹیم کا فریکوینسی ٹیبل آ جاتا ہے. اوکے، یہ ہے جی اس کا ہسٹوگرام. ہم یہاں سے کراس چیک بھی کر لیتے ہیں. منیمم اور میکسیمم 25 اور 37 اس کی ایسا ہی ہے. مین 33 ہے، اس کا بھی 33 ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے 3.7 سم تھنگ ہے، اس لیے یہ تو اس طرح سے یہ کراس چیک بھی ہو گیا. بہرحال ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ اسی طرح سے ڈسکرپٹیو انالائز سے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں جا کے ہم اسے آسانی سے ایک کلک میں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ نیکسٹ اسٹیپ کیسے کیسے آگے جانا ہے، تو بالکل بھی دیر نہیں لگتی. بڑے سے بڑا ڈیٹا جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہینڈل ہو جاتا ہے. ہیوج ڈیٹاز کو ہینڈل کرنے کے لیے ایس پی ایس ایس میں کو یوز کیا جاتا ہے. بہرحال ہم اس کو ایسے یہاں سے کاپی کر لیں گے ٹیبل کو، اور میں بھی اسی طرح سے نیو فائل کھول لیتے ہیں. یہاں پہ اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو جی، یہ اب پوری جو ہے یہ پیپر کو اس نے دوسرے رخ کا کر دیا ہے.
क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल होता इसका लेआउट भी हमने जो है वो इसके ओरिएंटेशन को बदल दिया है। अगर पोर्ट्रेट होता तो ये टेबल से पूरा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इस डेटा ने खुद ही पेज की सेटिंग को बदल के इसे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दिया। ओके, अब हमें इसकी ये वैल्यूज इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। Okay, now we'll see how to report these are things. तो हम जब भी बात रिपोर्ट करते हैं, पहली बात तो ये हम जो सोशल साइंसेस के लोग हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजी के लोग हैं, ये APA का स्टाइल जो है ये फॉलो करते हैं। APA में जिस तरह से रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है या ट्रिक करने को कहा जाता है वो हम करते हैं। तो on average sample of college students n is equal to 25 and the considerable more mean, हम mean की वैल्यू देख लेते हैं क्या है हमारे पास। mean की वैल्यू है जी 33। तो जब कभी हमने मीन को रिपोर्ट करना होता है तो उसे उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि अकेला मीन पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता जितनी इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन इसके साथ मिलकर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा इज 3.753 ओके। तो हम इन इंफॉर्मेशन को जो कि हमें इस डेटा एनालिसिस के मुतालिक मिली है उसको हम जब रिपोर्ट करते हैं तो उसमें मीन और के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को भी रिपोर्ट किया जाता है और मीन को इटैलिक में लिखना है, हमने इसे आम उसमें नहीं लिखना। और इसी तरह से हमारी बात करने का अंदाज एक और भी हो सकता है। कॉलेज स्टूडेंट्स है एवरेज सेल्फ एस्टीम, तो एवरेज यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3.753। और एक तीसरा अंदाज इस तरह से हो सकता है कि participants have n is equal to इसको हम कैलकुलेट करेंगे is equal to 33 कॉमा डाल के ST is equal to 3.753 जी। ये है इसके रिपोर्ट करने का तरीका। रिपोर्ट वर्ड्स में करने के साथ साथ हम इस तरह की टेबल में भी जो है वो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा वेरिएबल है सेल्फ एस्टीम, मेन है इसका 33 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.753 और इसी तरह से सिक्योरनेसेस और कर्टिसेस को भी हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। तो सिक्योरनेस जो है वो
जी सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो स्टैटिक है -0.8, इसका फॉन्ट भी बड़ा करते हैं 0.823 और स्टैटिक कितनी है जी स्टैंडर्ड एरर है 0.751 0.754 और इसी तरह से कर्टसेस है ये है -0.403 माइनस पॉइंट -0.403 the standard deviation of the value of this cortices is okay -902 -902 -0.905 इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि काबिल हो जाए थोड़ा so this is activity for you this is activity for you you have to enter this data in the SPSS बिल्कुल सेम उसी तरह से है उसी तरह से 25 पार्टिसिपेंट्स हैं और उनका ये किसी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उन डिप्रेशन को मैयर किया गया है वो किसी स्केल के थ्रू भी किया जा सकता है लोग स्केल के थ्रू ही किया होगा तो ये आपकी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के जितने भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ एक्टिविटी में इन सारे जो लेक्चर्स हैं this lecture is about 20 the data and analyze the data, the descriptive statistics of the data. We have presented the results of this data analysis and how to report it in the words and how to report it in the form of table. समटाइम्स ये दोनों ही चलती हैं टेबल बना होता है नीचे चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया होता है तो ये एक्टिविटी आपने करनी है डेटा को एंटर करना है और इसी तरह से एनालाइज में जाके एक दफ़ा फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करके आपने सारी सैम्पल स्टेटस मालूम करनी है और एक दफ़ा आपने जो डिस्क्रिप्टिव के साथ जो कैलकुलेशन है वो करना है सर्विस की बात किया था डिस्क्रिप्टिव सोर्सेस के साथ
जब इस पर हम लोग जाएंगे तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के नीचे डिस्क्रिप्टिव्स भी आ जाएगा। तो आपने ये जितनी भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी आपने इन दोनों फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी सारी मालूम करनी है और डिस्क्रिप्टिव के थ्रू भी सारी मालूम करनी है। तो यही आपकी जो है वो एक्टिविटी है। और सबसे पहले सीरियल नंबर आपका अपनी मर्ज़ी है, अपने SPSS की डेटा डेटे पर लगाना है तो लगा दें, नहीं लगाना तो रहने दें। और फिर ये डिप्रेशन के स्कोर्स हैं। तो इन सारी बातों से हम हमारे डेटा को डिस्क्राइब करने की थोड़ी हमें SPSS facilitate कर देता है with the help of these sample statistics to describe the data, and after the describing or getting the value of all statistics, sample statistics, then we report the data in the form of words and sentences, and also in the form of table. Sometimes researches में जो पहले मैंने बताया कि लाइन वर्ड्स में लिखा हुआ एक्सेप्ट किया जाता है किसी में टेबल की सूरत में, और किसी में दोनों चीज़ें साथ होती हैं कि टेबल बना हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लेक्चर में यही था, एक डेटा आपसे एंटर कराना था मुझे, जो भी एक्टिविटी के तौर पर अपने देकर आई हैं। जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों से कहनी है वो ये कि मैं हर चैप्टर के एंड पर एक एक्टिविटी देती हूँ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपने करनी है। कोई एक नोटबुक बना लें, ये कोई एक रजिस्टर बना लें, उस पर ये आपने एक्टिविटीज़ करनी है और मैंने इसका रिकॉर्ड चेक करना है। और हो सकता है कि जो सेशनल वर्क होते हैं, सेशनल वर्क का कुछ अमाउंट में ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसके थ्रू आपको होंगी। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सेशन मार्क्स पूरे भी मिल सकते हैं, और अगर आप अच्छा जो है वो नहीं काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं अच्छे बनाते रहेंगे, एक्टिविटीज़ को सीरियस होके नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो सेशन मार्क्स हैं वो भी उसी तरीके से कम हो जाएंगे। तो डेटा एडिटिंग, एंट्री और डेटा एनालाइजिंग और डेटा रिपोर्टिंग में अगर कोई भी रेफरेंस से कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो आप we will handle in the classroom inshallah. Very soon our classes, our session is going to start, and we will meet inshallah very soon.